Hello everyone, welcome back to Campus Chronicles. Today we are joined with a person who has made excellent progress in academia and research. With a PhD from the University of Electric Science and Technology in China, he has made significant contributions as being director of the Quality Enhancement Cell. We are thrilled to have you here today on our podcast, Dr. Saeed Ahmed Abro. Thank you so much for joining us. Thank you so much, Malika, for a wonderful introduction. It's my pleasure to record my podcast here. So let's start off with a little bit of your early background. I was told that you got a PhD from the University of Electric Science and Technology in China. How was that, and what steps did you have to take to get to the position you're at today? Thank you so much. Yes, you're right. Basically, I am an electronic engineer. I did my Bachelor of Engineering from Mehran University in 2006. Probably it was March. Then I did my master's from University of Mehran University of Engineering and Technology in 2010 and 11. I got opportunity to pursue my master's on Erasmus Mundus Mobility for a Scholarship in University of Zagreb, Croatia. So it was a European Union and Pakistani government project. I completed my master's in electronic systems engineering. Then I joined a few universities. Then, of course, in 2012, I joined Sukkur IBA University. In 2014, I went to China on a faculty development program, and I grabbed also the Chinese government scholarship. So I pursued my PhD in electronic science and technology with a specialization in the sensors and thin film devices. So it was a wonderful experience because I also went for the postdoc recently in Korea, Sungkung University, which is a top 100 university in the QS ranking. If I'm looking about the abroad study, my travel or my stay abroad have been wonderful. I learned a lot. I learned how to adopt your daily life with diverse peoples. They have a different culture and background. I also went through the research collaborations, the benchmark of the professor, the benchmark of the university, how they are meeting up. Totally, it was wonderful, and they added me all the things. They added me value in my personality, in my personal career. So I also continued these things at Sukkur IBA University when I back in 2017. I had experience of compiling the data of Pakistan Engineering Council and preparing departmental documents. So looking to these my credentials, thanks to Sir Asif Ahmed Sheikh, Vice Chancellor Sukkur IBA University, he trusted me and he provided me chance to lead a quality enhancement cell as a director. So nowadays I'm working as a director QEC Sukkur IBA University. You have a lot of experience most of your education was international. Now, going international to pursue higher studies, it changes a person, it shapes them. How did your experience international shape you, and what did it teach you in life? It's a wonderful question. Basically, once you are in your university, so like कहते हैं ना कभी कभार जो मेंढक होता है अपने कुएं में होता है तो पूरी दुनिया को अपना वही उसी को मेंढक अपने कुएं को दुनिया समझ रहा होता है. So once you are getting a chance and you are going to go visit abroad, so you have different types of the challenges. Like first challenge is a culture. Culture tells you about culture of food, culture of living life, how to speak, when to grow up from in the morning, and when you have to go to sleep. So these all are basically the attributes which you are going to follow once you are in the abroad. So I remember when I was in Croatia, it was a winter, so harsh winter. So I was told that you have to be at office at 7 o'clock in the morning. You feel that in the morning I wake up and I tried to basically reach at the office at a prescribed time, which was 7 a.m. So this timing, I learned a lot about how to follow timing. So this timing I learned once I was in the Croatia, and then how to speak with the people having different background,
different religious background, different culture background. They are eating different things. We have to eat something different. So you have to do some balanced things. So that's why I learned about how to adopt the things. So adaptability जो है वो मैंने वहाँ पर सीखी. फिर जब रिसर्च में मैं गया लैब्स में, उसका एक टाइम होता है, यू हैव टू रीच इन द लैब एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड यू हैव टू लीव द लैब ऑफ कोर्स एट द क्लोजिंग टाइम. सो वो जो कोलैबोरेशन है रिसर्च की, डेली जो रिसर्च है उसकी डेटा कंपाइल करके प्रोफेसर को देना, और वो जो रिसर्च टास्क होते हैं आपके, once you are entering into the lab, you have to follow some goals and outcomes are there. So जो आप आउटकम्स मैच करते हैं या उसको आप उसको अचीव कर रहे होते हैं, तो वो आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं प्रोफेसर को, प्रोग्रेस एक दिन की होती है. तो ये जो टास्क ओरिएंटेड है जो वो वहाँ पर मैंने सीखी. फिर यही चीज़ें जब हम यूनिवर्सिटी से हमने जो एजुकेशन ली, फिर मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया. तो अप्लाइड रिसर्च जब मन सा ज्वाइन सक्कर IBA, वो अप्लाइड रिसर्च और ये जो फील्ड ऑफ रिसर्च है ड्यूरिंग माई PhD, पोस्ट डॉक एंड द मास्टर्स, ये मैंने अप्लाई की यहाँ पर टीचिंग. तो ट्रांजिशनिंग टू द टीचिंग वाज बेसिकली अप्लाइड इंजीनियरिंग. तो दिस वे लीड्स मी to the QC and of course to the higher position here. So I'm trying my best to basically still learn a lot of things and want to basically inculcate these things in my practice, in my JDs, so that we can get a maximum output from our goals which are being assigned. So you currently serve as a director of Quality Enhancement Cell here at Sukkur IBA. So would you like to tell us what QEC exactly is? What are its goals? What does it hope to achieve here in Sukkur IBA? Yes, this is a wonderful question. Basically, ये जो QEC है basically HEC की एक ऑफिस समझें आप, और एक और QEC. These both are of the offices of the Higher Education Commission of Pakistan. 2006 में ये कॉन्सेप्ट आया कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं और वो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को, या यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम ऑफर कर रही है उसकी जो सर्विसेज दे रही है, उसको एवेल्यूएट कैसे करें कि वो जो स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट है, वो जो टीचर है, सोसाइटी है इन जनरल, तो वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट. सो उन्होंने एक सेक्शन बनाया जिसको नाम दिया गया क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल. उसकी हायरार्की है कि उसका डायरेक्टर क्वालिटी होता है और उसकी सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर्स होते हैं. इनका जो काम है बेसिकली ये मॉनिटर करना, एवेल्यूएट करना प्रोग्राम्स को. QEC इज नॉट जस्ट कंप्लायंस. वो कंप्लायंस है जो HEC देती है, गवर्नमेंट बॉडीज देती हैं, या जो आपका टास्क होता है उसको कंप्लायंस नहीं होता, बल्कि QEC का काम स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, टू बिकम ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनिवर्सिटी और द मैनेजमेंट, to implement those basically policies which are beneficial for the whole of the institute. So कभी कहा जाता था कि वाइस चांसलर की ऑफिस और डायरेक्टर फाइनेंस की ऑफिस और रजिस्ट्रार की ऑफिस, ये तीन जो ना मेन पिलर्स हैं, तीन पिलर्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में. चौथा एड हो गया उसमें पिलर, दैट इज बेसिकली QEC, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल. सो इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी QEC की. सो वी आर बेसिकली working on evaluation processes of the teacher course evaluations, affiliated services which are being provided. Then we are conducting the alumni and faculty survey and the employer survey with the help of the CDC, and through the HODs we are sending the satisfaction survey to the teachers. We are a member of some special committees where we are contributing that what should be included with respect to the quality standards. HEC ने अभी नई पॉलिसी, नया फ्रेमवर्क और इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज नोन एज पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन 23. So this is a new framework for the universities. So we are going to adopt, we have adopted already, but we are working on this one to implement those standards, so that we want to enhance the level of the teaching, level of the satisfaction of the teachers and students and the society in general, and all the fraternity of the Sukkur IBA University. So this is what the QEC is doing at this moment.
Under your leadership, QEC has achieved many milestones. It recently achieved the 601 to 800 ranking in the 2025 World University Rankings, which is a very big milestone for this establishment. So, what strategies do you apply to make sure that you reach more milestones and keep furthering QEC? Yes, Malika, really, it is biggest success of the Sukkur IBA University. Perhaps it was the dream of the late Professor Nisar Ahmed Siddiqui, the first Vice Chancellor of the Sukkur IBA University. वो जब कहते थे कि हमें Sukkur IBA को देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ओबामा का बेटा यहाँ पर पढ़ना होगा उसको भी अगर हम इतने लेवल मेंटेन करें तो. So he was working like this one. And of course, then the current management is also pursuing for this legacy. हमने क्या किया इसको achieve करने के लिए? This is basically a teamwork. A single person can't do to achieve these type of the milestones or the outcomes. उसके पीछे बहुत ही एक tremendous और consistency की एक policy है. सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2000 मुझे याद है 13 में start हुआ research के हवाले से कि research culture should be at the Sukkur IBA because we are the teaching university. So जब एक पेपर लाजमी हमें देना पड़ता था, जब एक पेपर फैकल्टी मेंबर नहीं करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, नॉन पीएचडी, तो उसको शो काज नोटिस भी आ जाता था कि भाई यू हैव नॉट पब्लिश. सो इट वाज अ बिट बाय बिट, इट इज जर्नी ऑफ द बिट बाय बिट स्टेप्स. सो इस तरह से फिर 2013-14 में रिसर्च पॉलिसी का इनेकाद किया गया, उसको ड्राफ्ट किया गया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया. तो जो पेपर्स हमारे रिसर्च स्कोपस इंडेक्स में आते हैं और जो पब्लिश होते हैं फिर उसकी, क्योंकि ये जो रैंकिंग्स है हमारी उसमें रिसर्च कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है. तो सक्कर आईबीए ने वो जो माइलस्टोन था 2013 से स्टार्ट किया, 12 से, वो उसका जो समर मिला वो 2022 में आके मिला. 21, 22, 23 तक हम रिपोर्टिंग स्टेट में थे टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में. उसके बाद जाके हमें रैंकिंग मिली जो कि 2025 में हमें 601 से 800 के बीच में हमें सेकंड टियर प्लेसमेंट इन पाकिस्तान मिली और सिंध में से कोई भी एक यूनिवर्सिटी नहीं थी. वी वर द फर्स्ट. वो जो ख्वाब था, जो ड्रीम था सिद्दीकी साहब का और हम सब का कि वी वांट टू सी सक्कर आईबीए यूनिवर्सिटी एट द ग्लोबल लेवल. सो यस, वी अचीव दैट. सो इसके जो पीछे था वो रिसर्च पॉलिसी थी. हमने क्या किया कि बिकॉज रिक्वायरमेंट होती है आपकी 1000 पेपर्स, तो 1000 पेपर तभी आ सकते थे. एक तो रिसर्च कल्चर ऑफ इन्वायरमेंट दें और कल्चर को इस्टेब्लिश करें, फिर आप जो टीचर्स हैं उनको रिवार्ड दें ताकि वो एक उनको शाबाशी भी मिले और वो दे कैन पब्लिश द पेपर्स. तो इस तरह से हमारे पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, साइटेशंस बढ़ रही हैं. अब जो ना सक्कर आईबीए हमेशा इंशाल्लाह रिसर्च रैंकिंग में रहेगा बिकॉज उनकी वर्ल्ड रैंकिंग में रहेगा बिकॉज साइटेशंस हो रही हैं, पब्लिकेशंस कंसिस्टेंसी के साथ आ रही हैं. एंड वी हैव कंटिन्यूड दिस स्पिरिट ऑफ रिवार्डिंग द टीचर्स ऑन द रिसर्च पॉलिसी. सो 2005 में हम 601 से 800 में आ गए और स्कूल और कॉलेज डिपार्टमेंट लेवल पे भी आ गए. हमारी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और एजुकेशन बिजनेस डिपार्टमेंट है वो 501 में से 600 के बीच में हम विंडो में आए हैं. और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस वो 600 में से 800 की विंडोज़ में आ गई हैं. क्यूएस रैंकिंग में हम 2 पोजीशंस में हैं, एक है एशिया और साउथ एशिया. एशिया में हम देखेंगे तो 120 में हम एशिया में 201 में से 250 के बीच में हम एशिया में आए हैं 2025 में. और साउथ एशिया में हम हैं 441 से 450 के दरमियान. सो दिस व्हाट द रैंकिंग told us, or these numbers basically telling us that yes, we are on the right track. We have to consistently work on these parameters so that we want to see सक्कर IBA. because मैं जो डेटा को देख रहा हूँ सक्कर IBA की, जो जब मैं सबमिट कर रहा होता हूँ अपनी टीम के साथ, तो हम देख रहे हैं कि हमारी पोटेंशियल है कि हम 200 के नीचे भी आ सकते हैं, यानी कि वी कैन कम इन द विंडो ऑफ द 200 to the 100. इंशाल्लाह in couple of the years we will be in the 200 or less than 200 of ranking in the international world university ranking of the QS and the Times. Inshallah. Under your leadership, you oversee quality assurance in both academia and administrative side.
So, what leadership strategies do you apply to make sure that your staff is always improving in QEC and at Sukkur IBA? Yes, so wonderful because QC जो है ये जो HEC का मैंने फ्रेमवर्क बताया आपको, न्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, उसमें कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक CQI का एक बड़ा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नंबर 16 राइप रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एक फ्रेमवर्क है. तो वी बिलीव इन अ CQI सिस्टम, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स. उसमें पहले भी हम जब थे 2020 से पहले भी ये था कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई जाती थी सक्कर IBA में, या वी वर यूज्ड टू गो आउटसाइड टू जॉइन द IBA कराची, लम्स, नस्ट और कराची के बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे जहाँ पर हम ट्रेनिंग करने जा रहे थे. अभी मैंने कल्चर को रिवाइव किया है विद द अप्रूवल ऑफ द न्यू बेसिकली वाइस चांसलर ऑफ सक्कर IBA यूनिवर्सिटी सर आसिफ अहमद शेख. ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑफ द स्टाफ, ऑफ द फैकल्टी, सो दैट वी वांट टू. एंड उसमें मैंने ये किया है कि जो ट्रेनर है हमारा, बिकॉज वी हैव अ गुड नंबर, एक्सीलेंट नंबर ऑफ द PhDs, दे हैव अ डिफरेंट बेसिकली रिसर्च बैकग्राउंड्स एंड दे आर गोइंग टू बी द रिसोर्स पर्सन्स. और एक सक्सेसफुली हम इसको जो नो मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं फॉर द स्टाफ, फॉर द फैकल्टी. एक तो वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का एक वो चल रहा है. सेकेंडली ये जो न्यू फ्रेमवर्क है, जो HEC की नई पॉलिसीज आती हैं या गवर्नमेंट की, तो मेरी JDs में या जो मैं जो समझता हूँ कि ये क्वालिटी तभी आ सकती है बिकॉज क्वालिटी इज नॉट अ जॉब ऑफ द QC, इट इज़ अ जॉब ऑफ एवरीवन. सो क्वालिटी मैटर्स अलॉट. जब हम बाजार में जाते हैं तो कोई भी कपड़ा हो लेना हो या शूज़ लेने हो तो हम एक अच्छा सा सिलेक्ट करेंगे. तो मेरी जो अपनी फिलॉसफी है, इदारे जो है ना वो शॉप्स नहीं है, या दीज आर नॉट, हम कहते हैं कि स्टूडेंट हमारे कस्टमर्स हैं. तो मेरी जो ओपिनियन है, स्टूडेंट्स आर नॉट द कस्टमर्स. कस्टमर्स बाजार में जाते हैं शॉप्स में. तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम क्वालिटी एजुकेशन दें. तो क्वालिटी एजुकेशन तभी आएगी जब हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मैनेजमेंट में, टीचिंग साइड पे, नॉन टीचिंग साइड पे, सो वंस दे आर टुगेदर वी कैन डिलीवर अ लॉट. सो इस फ्रेमवर्क्स को हम जो ना वो इसकी जो पॉलिसीज़ को मैं हमेशा इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ, स्टेक होल्डर्स को बताऊँ कि पॉलिसी से व्हाट इज़ इनसाइड द पॉलिसी, so that they can understand, they can align their curriculum, align their operations in line with these standards, so that we can achieve a quality standards and we can report those standards to the HEC and the external bodies. Now, QEC places a very big emphasis on data-driven research, but I don't understand why. So, can you give us an example of why data-driven insights leads to enhancement in academic performance? I guess this is the most important question, keeping this current era, because this is the information technology era and artificial intelligence era. So what I have worked on data since 2010 to 2024. I have compiled the data with the help of the ICT. This is under the work we have got some very excellent results. उसमें जो बच्चे फीडबैक लिख के आते हैं, जो टीचर्स फीडबैक लिख रहे होते हैं अपनी सेटिस्फिकेशन के हवाले से, या और कुछ पैरामीटर्स जो उसको हम कंपाइल करने की कोशिश कर रहे थे. जब उन सवालात को एड्रेस डेटा हमारे पास नहीं होगी तो हमें कहाँ से पता पड़ेगा कि देयर इज ए रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एक फीडबैक आना चाहिए. फीडबैक एक तो है टीचर से, एक स्टूडेंट से, एक दूसरे सेक्शन से. सो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम सेकंड स्टेप हम क्या कर रहे हैं. तो डेटा के हवाले से जो NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थ्रू AI, हम ये मॉडल्स एडॉप्ट कर रहे हैं ताकि हम क्लास डिलीवरी और जो क्वालिटी एजुकेशन की डिलीवरी और जो कंटेंट की डिलीवरी है वो हम इसको एम्फसाइज कर सकें, और जो राइट पर्सन फॉर द राइट कोर्स, और ये जो बच्चे हमें फीडबैक दे रहे होते हैं उस पर बड़ा एक काफ़ी अच्छी डेटा हमें मिली है, उसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग आसानी से कर सकते हैं. तो ये जो मॉडल मैंने अभी डैशबोर्ड बनवाया है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, हम HODs को और डीन्स को देंगे
तो वो डेटा के बेसिस पे लेट सपोज सईद है, मैं 2012 से 11 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सईद ने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए हैं, अगर सईद को कोर्स एलोकेशन दी जा रही है एचओडी, तो क्या करेगा, इट विल टाइप अबाउट माय नेम सईद अहमद खान, तो क्या मेरे जितने भी कोर्सेज पढ़ाए उसका एक ट्रेंड सेट आ जाएगा, एक ट्रेंडिंग आ जाएगी, कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खुल के आ जाएगा कि वेयर आई हैव कंट्रीब्यूटेड एक्सीलेंट। तो वो कोर्सेज ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा पूल है प्रोफेसर एचओडी के पास और डीन के पास, कि वहाँ पर कोर्सेज को देखते हुए मुझे अलोकेट कर सकता है कि ये कोर्स इसके लिए बेहतर है और ये कोर्स इसके लिए बेहतर है। तो कम से कम ये इंसाइट्स हमें मिल रही हैं और हमें डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, क्लास डिलीवरी और कंटेंट डिलीवरी बड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि हमें लेटेस्ट टूल्स को देखते हुए अप्लाई करना चाहिए। सेकेंडली, मैं जो आपको कह रहा था कि टीचर्स के हवाले से या जो इस फीडबैक के हवाले से हम और भी काम कर रहे हैं, कि सिर्फ हम एक क्लासरूम में टीचिंग और कोर्स एवोल्यूशन ले रहे होते हैं। सो इंशाल्लाह इट इज़ इन फेज कि हम जो एफिलिएटेड सर्विसेज हैं, जैसे कैंटीन सर्विसेज है, लेट्स सपोज सीडीसी सर्विसेज हैं, और जो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव्स हैं या एचआर हैं, एडमिशन, एग्ज़ाम, सो ये भी है कि कम से कम 360 पे हम जो ना वो क्वालिटी एवेल्यूएशन करें, ताकि जो दूसरे हमारे सेक्शंस हैं उसको भी हम इस क्वालिटी फ्रेमवर्क में लेके आ जाएं, ताकि वी कैन एनहांस द लेवल ऑफ द क्वालिटी कल्चर एट सक्कर IBA यूनिवर्सिटी। I think this episode would be remiss if we did not talk about the challenges that you might have faced. So tell us about some challenges, some obstacles you might have faced, and what did you do to address them and solve them? Yes, challenge. Things are basically always known once you have the opposite side. So there's no way to basically leads to the London or everywhere smoothly. So there are always challenges inside once you are walking on the path of the any goal. So challenges जो मुझे जो फेस है या जो challenges जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आती हैं, वो एक है जो नया फ्रेमवर्क आता है, कभी कभार ना उसको इम्प्लीमेंट करना टफ हो जाता है, क्योंकि फ्रेमवर्क है इम्प्लीमेंटेशन, उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके आउटकम्स हैं, वो तभी आ सकेंगी जब फ्रेमवर्क को हम समझ जाएंगे। तो फ्रेमवर्क जो HEC का नया है खुद, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बताएं कि व्हाट डज इट मीन, कि हम कैसे इसकी आउटकम ले सकते हैं, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे स्टैंडर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के, तो वो SDGs तभी अचीव हो सकते हैं बिकॉज वी हैव अ लश ग्रीन एनवायरनमेंट एट सक्कर IBA, we have a solar system, we have electrical vehicles, we have a minimum CO2 emission at the campus. So we have to report these things, we have to get the data of these green initiatives, and then once we are getting the data of the green initiatives, we can report these to the SDGs. So how to inculcate these SDGs, these knowledges or parameters to the students, to the faculty, to the staff. So this bit challenging once we are going to talk with these stakeholders. तो उनका जो फ्रेमवर्क को समझाना, उसकी इम्प्लीमेंट करवाना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंज है। दूसरा जाहिर है डेटा है, सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना, तो उसकी डेटा की इम्प्लीमेंटेशन करना और उसकी जो ना वो उसके रिजल्ट्स लेके आना, इसके ऊपर एक्शन प्लान करना, तो ये भी एक किस्म का चैलेंज है। सो आई होप के वी आर इन अ राइट डायरेक्शन, whatever we are getting the feedback from the external bodies and from the internal bodies. So we are going to implement these things, and ये consistently एक cycle है QEC का, जिसके थ्रू हम जो ना वो जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजिक जो इनिशिएटिव्स हैं या स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर है वो QEC इम्पोर्टेंट पार्टनर है। तो जितने भी क्वालिटी कल्चर की पॉइंट्स आएंगी, क्वालिटी तभी इम्प्रूवमेंट होगी जब सबका टीम वर्क हो, सब मिलके काम करें, तो वी कैन अचीव दीज, वी कैन ओवरकम दोज चैलेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग, एंड वी कैन गेट व्हाटएवर आवर मिशन एंड द विजन इज टॉकिंग अबाउट। Well, Dr. Saeed, I think we discussed some very good points today, and I feel like not just me, but even our viewers have, I'm sure, learned a lot. So I would like to say thank you so much for joining us today and sitting down and talking with us today. It was an amazing episode to film. Thank you, Malika. Thank you, your team. Thank you, Campus Chronicles. I hope you should keep these things continue.
so that the maximum audience can get maximum input. They can give a maximum input, and let's strive for together to achieve the mission and the vision of the Sukkur IBA. Thank you so much. Thank you so much. Well, thank you so much everyone for watching. This is Campus Chronicles signing out.